Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. Today we are going to discuss the best places to apply the fragrance. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। Perfume is a very integral part of one's life. If you don't smell good, you will not feel good. And if you will not feel good, there will be no confidence. And if there will be no confidence, then of course everything will be bad. Approximately 60% of the world population use perfume, scents, or any other type of fragrance. But कई बार हमें ये नहीं पता होता है कि what is the best place to apply that fragrance. तो चलिए जानते हैं कि what are the best places to apply the fragrance. First, let's discuss about men. The best place to apply the fragrance is lower jaw, neck, shoulder, chest, inner elbow, forearm and wrist. Now let's discuss the best places to apply a fragrance by a woman. Behind the ears, neck, shoulder, chest, inner elbow, below midriff, wrist, behind knees, calves and ankles. So these are the best places to apply the fragrance. Smartly choose your fragrance type, build your trust level, improve your confidence, reduce stress and be happy. तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।